back to our channel. We are back with another video. So we thought to take a break from our regular makeup videos, and now we are doing a skincare. So I saw a facial kit on Daraz, and then I saw a video about it reviews that looked very promising. So I thought to give it a try and share my thoughts with you guys. So let's unbox. So this is what it looks like. अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है. सबसे पहले इसमें से निकला है ये lightening skin polish with grapeseed oil and multivitamins, and it says that it gently exfoliates dead skin layer and clears dark spots. उसके साथ इनका एक ये कार्ड था जिसमें सारी चीजें mentioned हैं. This is the box. So the first step is cleanser, and this cleanser has pro vitamin B5. इससे आपके पोर्स बहुत अच्छी तरह क्लेंस हो जाएंगे और उसके अलावा जो ब्लेमिशेस होंगे वो भी रिड्यूस हो सकते हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है मसाज क्रीम. This massage cream has minerals and silicone oil, and it is for softening and moisturizing your skin. And the third step is double exfoliating scrub. And this quickly exfoliates rough, dull, dead skin and revitalizes the appearance of the skin. And it also has mineral oil and walnut shell cream. Fourth step is skin polish, and इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था. It has grapeseed oil and multivitamins. And step number 5 will be this skin lightening organic clay mask. This clay mask has grape extract and peppermint. It lightens, exfoliates and revitalizes the appearance of your skin. And step number 6 is multivitamin massage cream. So it refreshes and relaxes the dull skin, and it is with multivitamin fruit extract. And the last step will be this moisturizing mud mask. This mud mask contains aloe vera and shea butter, and it says that it will lighten your skin and moisturize and purify it. So this is all for all the products we got in the package, and now we will start the video. Before starting your face, make sure that your face is clean and dry. And now I will just go and remove my lipstick. This video is not sponsored. I got this facial kit from Daraz, and I will add this screenshot on the screen. So first of all, I am using cleanser. इसका टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का है, काफी थिक सा है. Its smell is not too good and not too bad. It was just okay. You should apply a small amount of cleanser to your face and then massage it gently for 5 minutes. I have fast forwarded the video, so it looks like I am doing it very harshly, but believe me, I didn't. I will wet my face so that it doesn't dry out. Also, don't forget your neck, apply some cleanser to it. And for your jawline and cheekbones, use upward motions. The area around your eyes is sensitive, so use your ring finger on that area because it has the least pressure. I have been massaging it for 5 minutes, so now I am wiping it off with wet sponge. I have only used cleanser now, and you can already see a difference. Since it is a massage cream, so it has a creamy texture. It smells so good. Now using same motions, I will massage it for 10 minutes.
Now after 10 minutes I will wipe it off. Our next step is a scrub. It has exfoliating beads which help remove dead skin. It has a very fruity smell. I am focusing it more on my nose and the area below my lips because this is where I usually have blackheads and whiteheads. After massaging the scrub for 5 minutes, I am removing it with wet sponge. Step 4 is the skin polish. It has a creamy texture with micro cleansing beads. It has a very strong, very nice fruity smell. As skin polishing is an intense form of exfoliation, it should not be done every day. It is recommended to be done once or twice a week. Never use your palms for massaging any product because they are warm. Always use your fingers. After massaging it for several minutes, now I am wiping it off. As it is a clay mask, it has a very thick creamy texture. I have applied an even layer of this mask and now I will let it dry for 25 minutes. So now I'm back after 25 minutes and as you can see the mask is completely dry, so now I will wipe it off. Our sixth step is multivitamin massage cream. It has a very smooth creamy texture and it feels so good on the skin. I am massaging it in very gentle circular motion for several minutes and then I will wipe it off. Our last step is moisturizing mud mask and it feels so nourishing on the skin. I applied an even layer of this mask and then let it dry for 25 minutes. It didn't dry but instead it got absorbed into my skin and became completely transparent. So I just wiped it off. So this kit does not include skin toner, so I'm using this toner by Dr. Bilkis. And if you follow us on Instagram, you must have seen the review of this toner. So now I'm applying it with cotton balls. अब बात करते हैं इन सब तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में कि प्रोडक्ट्स ने कैसा वर्क किया। सो हमारा फर्स्ट स्टेप था क्लेंजर और ये क्लेम करता है कि आपके पोर्स को बहुत डीपली क्लेंज करता है और इसने अपना काम किया, बट एक चीज़ इसका कलर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था। एज फार एज इट डज द जॉब, द कलर रियली डजंट मैटर। सेकेंड स्टेप था हमारा मसाज क्रीम और इट सेज दैट इट सॉफ्टन्स एंड मॉइस्चराइजेज योर स्किन और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसकी स्मेल भी बहुत पसंद आई मुझे और बाकी इससे स्किन आपकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप है डबल एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। ये आपकी स्किन को अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट करता है। इसको आपने 4-5 मिनट्स तक इसको स्क्रब करना होता है और फिर आपकी जो भी डेड स्किन है और जो डल स्किन हो जाती है आपकी बहुत ज़्यादा, तो वो रिमूव हो जाती है। हमारा फोर्थ स्टेप था वाइटनिंग स्किन पॉलिश और इट क्लेम्स दैट इट रिफ्रेशेस योर एंड रीस्टोर योर स्किन लेयर एंड इट ऑल्सो क्लियर्स योर डार्क स्पॉट्स। तो डार्क स्पॉट्स के लिए अभी हम एक यूज़ में नहीं कह सकते कि आपके डार्क स्पॉट्स क्लियर हो सकते हैं कि नहीं, उसके लिए आपको कंटिन्यूसली इसको यूज़ करना पड़ेगा रेगुलरली, तो फिर ये आपको एक कोई विजिबल डिफरेंस इसमें देखने का मिल सकता है। सो हमारा फिफ्थ स्टेप था स्किन वाइटनिंग ऑर्गेनिक क्ले मास्क। It claims that it lightens and revitalizes the appearance of your skin and I think it worked for it. So next हमारा सिक्स्थ स्टेप था मल्टीविटामिन मसाज क्रीम and it claims that it refreshes and relaxes the skin.
सो इट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी नरिशिंग। काफ़ी ज़्यादा इससे स्किन आपकी सॉफ्ट हो जाती है और स्किन के ऊपर बहुत अच्छी फील होती है। इसके बाद 7th और लास्ट स्टेप था हमारा मॉइस्चराइजिंग मड मास्क है एंड इट लाइटन्स एंड मॉइस्चराइजेस एज वेल एज प्यूरिफाइज योर स्किन। सो ये काफ़ी ज़्यादा नरिशिंग और हाइड्रेटिंग था इसका फील स्किन के ऊपर और इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और काफ़ी अच्छा मास्क है। इसके अंदर एलोवेरा और शिया बटर है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी आपकी स्किन। If you enjoyed today's video, be sure to give it a huge thumbs up and check our last video right over here. And tell us in the comments what else you would like to see next. If you want to watch more reviews of skincare products or if you just want to watch our regular makeup tutorials, also don't forget to subscribe and turn on notification bell so that you won't miss any upcoming video. If you miss us